वेलकम बैक स्टूडेंट टू डे 14। ओके, अब हमारे पास 6 दिन और बाकी हैं, 6 टॉपिक और बाकी हैं। फटाफट बताओ कितनी रीडिंग की आपने ब्लैंक सॉल्व की। ओके, आपने रीडिंग और राइटिंग की कितनी ब्लैंक सॉल्व की, नीचे कमेंट में मेरे को ज़रूर लिख के बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपको कोई भी डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, याद रखना, सॉफ्टवेयर कैन शो योर स्कोर बट ओनली यू कैन इम्प्रूव इट। ओके, सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट मत रहना, जितना हो सके मेहनत करो। हाँ, स्पीकिंग में इशू आ रहा है, स्पीकिंग में स्कोर नहीं बढ़ रहा, या कुछ सॉफ्टवेयर जो स्पीकिंग में स्कोर नहीं दे रहे हैं, बुक पढ़ो। ओके, इंग्लिश की कोई भी बुक उठा लो, कोई भी नॉवल उठा लो और उसे पढ़ना शुरू कर दो। ओके, एक कॉन्फिडेंस रखो कि यार मैंने तो 300-400 पेज पढ़ लिए हैं, अब मेरे को 3 लाइन पढ़नी है जाके। ओके, यू नीड टू बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग पोर्शन। ओके, ऐसे राइटिंग नो डाउट मैंने टेम्पलेट दे दिया है, पर आपको जो 4 लाइन लिखनी है खुद ही लिखनी है। ओके, तो जितना हो सके घर से प्रैक्टिस के टाइम आप 8 से 10 लाइन उसमें प्रैक्टिस करके जाओ, एग्ज़ाम में जाके 4 ही हो जाएगी, क्योंकि उस दौरान उस माहौल में 4 याद आनी चाहिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समराइज स्पोकन टेक्स्ट मैंने कल आपको फॉर्मेट दे दिया है, टेम्पलेट उसी दिन याद करो, उसे अगले दिन पे कैरी फॉरवर्ड मत करो। हमारा 20 डेज पीटी चैलेंज है, जो टॉपिक जिस दिन चला उसी दिन उसे क्लियर कर दो। ओके, आई रिपीट, उसी दिन उसे क्लियर कर दो। आज जो टॉपिक चलने वाला है, इग्नोर वाला टॉपिक चलने वाला है। सही गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई चिंता नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि वेटेज बहुत कम। ओके, हाँ, टाइम की बात करूँ, कल एक पॉइंट खाली मिस हो गया था, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ओके, समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टोटल टाइम 10 मिनट्स होता है। 10 मिनट्स में 2 मिनट का सपोज ऑडियो हो गया। ओके, 70 सेकंड यानी 1.5 मिनट का, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट का आपका ऑडियो रहेगा। तो 1.5 मिनट का जो ऑडियो है वो आपके 10 मिनट्स में से माइनस होता जाएगा। ओके, यानी आपके पास अब टाइप करने के लिए टोटल बचेगा 8 मिनट। ओके, टाइप करने के लिए टोटल आपके पास 8 मिनट बचेगा। 8 मिनट में आपको 50 to 70 वर्ड्स लिखने के हैं। आपने वो 4 मिनट में टाइप कर दिया, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, क्योंकि वो टाइम कहीं ऐड नहीं होने वाला है, तो पूरे 10 मिनट लेने हैं तो ले लेना। ओके, क्योंकि 50 वर्ड्स आराम से टाइप हो जाएंगे। टेम्पलेट तो दे दिया है 39 वर्ड्स का, उसमें आपको ही खाली लिखने का है, टाइपिंग की स्पीड आपकी वैसे ही बढ़ जाएगी उस वजह से। उसके बाद जो आपका जनरल टाइमर शुरू हो जाएगा, यानी उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा दैट इज़ MCQ मल्टीपल, उसमें आपका जनरल टाइमर होगा, यानी जब तक आप नेक्स्ट नहीं दबाओगे तब तक नेक्स्ट होगा नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लेना है? 0 सेकेंड्स। है ना इंटरेस्टिंग बात? क्यों? क्योंकि इसके बाद अब टोटल 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो 7 क्वेश्चंस में जनरल टाइमर रहेगा। आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका टोटल लिसनिंग सेक्शन मैंने आपको बताया था कि वो 38 मिनट्स का है, जिसमें से 10 मिनट्स आपके डिडक्ट हो गए समराइज स्पोकन टेक्स्ट के, बच्चे आपके पास 28 मिनट्स। 28 मिनट्स में से 22 to 23 मिनट्स का तो ऑडियो ही होगा जो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको ऑडियो तो सुनना ही पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका ऑडियो नहीं सुना गया, पीटी आपको ऑडियो स्किप नहीं करने देगा, तो आपको वो ऑडियो तो सुनना ही पड़ेगा। यानी 22 मिनट्स का तो ऑडियो ही रहेगा। तो ऑडियो ख़त्म होने तक आपका आंसर टिक हो जाना चाहिए। हमने रीडिंग में जैसा MCQ मल्टीपल्स देखा था, वैसा ही MCQ मल्टीपल ये यहाँ पे है। उसमें पैसेज पढ़ के टिक करना होता है, इसमें पैसेज सुन के टिक करना होता है। वही चीज़ उसमें रीडिंग में MCQ मल्टीपल में नेगेटिव मार्किंग था, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए होंगे, तो हम कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, हम एक ही टिक करके आएंगे, हम एक से ज़्यादा टिक नहीं करेंगे। क्या रिपीट, हम एक से ज़्यादा टिक नहीं करेंगे। क्लियर? चल एक ऑडियो सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह करना है। एग्जाम में 1 या 2 ही आने वाला है, वेटेज 1 मार्क का ही और सिर्फ लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करता है। चलिए ऑडियो सुनते हैं। Both men and women gained weight. When it came to race, black women had the most rapid weight gain, followed by white women and then black and white men. The weight gain was just a few pounds, but even a slightly higher BMI is associated with weight-related health issues. Several reasons exist for the weight discrepancy between the single and married people. For example, married men and women may be less concerned about their body weight because they're no longer actively seeking a mate. Plus, married people have a regular dining partner, possibly leading to more meals. On the single side, those who are widowed or have gone through a divorce may lose weight due to stress. So while this news may not be good for the smug marrieds, it may be welcomed by Bridget Jones. The single and very weight-conscious Jones may actually have had the easier path to staying thin than her married friends. मेरे को एक ये वाला आंसर लगता है, पहला वाला,
और एक ये वाला लगता है, क्योंकि उसमें बीच में एक लाइन वो क्लियर बोला है कि दे हैव रेगुलर डाइनिंग पार्टनर्स, और उनको मील्स अब रेगुलर टाइम पे ज़्यादा मिल रहे हैं. सेकंड है बिकॉज दे डोंट नीड टू फाइंड अ मेट एनीमोर एंड केयर लेस अबाउट देयर वेट. ओके, जनरली बोलते हैं कि यार कोई मिलेगा तो उसके लिए वेट लूज़ करना पड़ेगा, अच्छा दिखना पड़ेगा, शादी होने के बाद तो क्या ही है, नहीं मस्ती करूँ. तो ऑप्शन बचता है बी, डी और ई. ओके, बिकॉज द पार्टनर्स रिक्वायर देम टू ईट मोर. ज़बरदस्ती तो कोई खिलाएगा नहीं. बिकॉज दे आर हैप्पियर आफ्टर मैरिज एंड ईट मोर, बहुत गलत बात. बिकॉज पीपल्स लाइफ इज़ लेस स्ट्रेसफुल आफ्टर मैरिज, बहुत ज़्यादा ही गलत बात. ठीक है, तो आई थिंक आंसर आपका ए और सी है. उसके लिए मैं सी के लिए 100% श्योर हूँ, क्योंकि वो एक क्लियर लाइन बोला ही था, दे डोंट नीड टू फाइंड द मीट. तो मैंने जैसा बोला कि एक ही टिक करना है तो एक ही टिक करके आऊँगा. भले मेरे को लग रहा है कि ये भी सही है, क्यों टिक क्यों मैं रिस्क क्यों लूँ. ओके, मेरे को 1 मार्क मिल रहा है, बहुत हो गया मेरे लिए. ओके, मैं दूसरा उसमें ट्राई भी नहीं करूँगा. लेट्स चेक दी आंसर. सही है, सही सही. ए और सी दोनों आंसर है आपका. अगर आपने भी आंसर सोचा हो तो अच्छी बात है. अब एमसीक्यू मल्टीपल की प्रैक्टिस. देखो एमसीक्यू मल्टीपल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे. आज के दिन के लिए तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओके, क्योंकि वो एक छोटे छोटे मार्क्स है ना, वो भी बढ़ा के आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, जैसे आंसर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू सिंगल हो गया, एमसीक्यू मल्टीपल हो गया, लिसनिंग का एमसीक्यू मल्टीपल हो गया, ये सब भी कंट्रीब्यूट करके आपको 7 to 8 मार्क्स ओवरऑल आपके बढ़ा के दे सकते हैं. ओके, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जिस दिन चल रही है उस दिन तो वो पूरी प्रैक्टिस कर ही लो. फिर डायरेक्ट हम फुल मॉक की जब प्रैक्टिस करेंगे तब करेंगे, और फिर डायरेक्ट एग्जाम में मेन फोकस किन 4 टॉपिक्स पे करना है वो जानने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा. मिलते हैं हम अगले वीडियो में. Chapter 6, Multiple Choice, Choose Multiple Answers, Track 11. All right, a little bit of history. Well, the current debate that we're having is a uniquely American phenomenon. Uniquely American because voting machines don't exist in most of the rest of the world, including Western Europe, where one might think we find them. We really only have voting machines, I think about a third or a half of South America uses voting technology. Holland does, because there's a machine manufacturer there. And the whole country of India uses electronic voting machines, which is quite interesting. Those machines are made by the Indian government. But other than that, everyone votes on good old paper ballots. Test 1. Multiple choice. Choose multiple answers. Page 48. 1. Last week, we looked at urban regeneration and some of the consequences of this, one of which was the relocation of people from urban to suburban areas to largely allow them a better standard of living, because housing is cheaper in the suburbs, so they have more disposable income.
but they have to commute. And commuters need rapid transport to get them from A to B. So subway construction is, well, it's booming in some parts of the world. It's clearly being seen as the answer to the type of migration that I've just mentioned. It often gets huge public support because, well, if a subway is going to help you have a better lifestyle, then what's there to argue about? Well, quite a lot, actually. For a start, in order to go ahead with a major project of this kind, you need to be absolutely sure that the ground, and more to the point, what lies beneath the ground, can support underground transport. And to address questions like that, engineers have to be really experienced, really knowledgeable about the local area, water levels, land formation, and so on. And those key issues are what I want to focus on today. Passengers don't think about construction. They trust other, better qualified people to do it for them. And governments have to choose these people very carefully. Two. In places where there's been serious community tensions, Brickenden's a good example of this. There were 250 reported incidents there in 2009, often to do with neighbours and arguments, but criminal activity too. And the police will tell you that if you leave residents to sort things out for themselves, the number of incidents rises. It doesn't fall. So the local council realised that they had to do something. So they went round to people's houses and met them and their neighbours and talked to everyone and got a general idea of what the local concerns were. If there were extended families involved, they looked at those particular families more closely and all the relatives and got some of the family intervention services to talk to them. And there were some very positive results. You can pick out the hotspots, the main areas for crime. But the hotspots don't tell you what causes the crime in the first place, and so don't address the issues. So this proactive, more direct approach by the council worked well. And this was followed up with other quite practical solutions like cleaning up the area, getting rid of debris in alleyways and just making the place somewhere more agreeable, more livable. Test 2. Multiple choice. Choose multiple answers. Page 82. 1. Today we have Paul Whitner, Head of Theatre Studies, here to tell us a bit about the Theatre Studies programme.
Paul, what makes this course different? Well, I think it's the environment we can offer students. We're a relatively small conservatoire, and we offer superb courses in a number of subjects, with an opportunity for performance. We've built a reputation for producing both traditional and alternative performances. I guess the course would appeal to potential students for the level of support that's available, and I mean from the tutors as well as from the fellow students and alumni. There's a real sense of community. So, what are you looking for in prospective students? I guess we're looking for people who are able to cope with the high demands that the course will put on them. In that way, I think the programme reflects the workplace we're preparing them for, so it's incredibly intense and we cover a huge range of projects, and they will be introduced to areas of performance design which they might never have considered before. We need students with imagination and dedication who are able to keep up when the going gets tough. It can be demanding, but we have to remember that the college enjoys an excellent reputation for student retention, student satisfaction, and student employment after graduation. Test 3. Multiple choice. Choose multiple answers. Page 109. 1. I'd like to start this lecture on the use of technology in education by talking about a subject that's probably close to all your hearts, which is the way that student work is graded. And specifically, I want to talk to you about some of the ways written assignments or essays are marked. Well, as you all know, traditionally, writing done by a student is checked, marked and graded by a teacher, a tutor, or, in some situations, an examiner. In other words, a real person. Software to mark essays has been in development for some time, and grading software on computers is already used by some universities to mark exams, but it is still viewed with suspicion by some. How can a computer mark an essay, they ask? Well, a recent study compared the human ability to give grades to student essays to the ability of a computer to do the same job. In the study, over 16,000 essays were used. These essays had already been previously marked by at least one trained human grader. The study showed that the essay marks given by the computer software were almost the same as those from human graders, which I think you'll agree is a controversial result. And it's likely to make us as teachers re-evaluate how we grade written work. Two. A further example of endangered species is the shark. Around 40 million sharks are killed each year. That's quite a lot.
Consequently, the number of sharks is decreasing. So let's take a closer look at the causes of this. Firstly, in recent decades, sharks have become important. This is largely due to the growing popularity in some parts of the world for the consumption of shark. It has become a very valuable food source. OK, so maybe you're thinking, well, lots of other fish like cod, salmon or tuna are caught for human consumption and they aren't disappearing at the same rate as sharks. Well, that's true, but the difference here is sharks are not able to repopulate or reproduce themselves quickly like the other types of fish that are commonly fished as a food source. Why? Because sharks are slow breeders. Sharks mature slowly and it takes them years to reach the age for egg production, and then they produce only a few eggs, so that means just a few new sharks. Humans have a 9-month pregnancy or gestation period, whereas some shark species are thought to have extremely long gestation periods, as long as 3 years. This makes them much more vulnerable and in danger of dying out than many other fish species.